अच्छा beta, the content or concept under discussion is from energetics. So which concept we're going to discuss? We're going to discuss concept of target equations. Okay, but we're going to discuss target equation concept. So, and the concept is from energetics. Okay, topic energetics. इसमें बेटा what we need to do, they will give us equations. Given equations will be there, and from given equations we are supposed to produce required equation. Okay, so let us say given equations are like this: carbon plus oxygen, it produces carbon dioxide gas. The enthalpy change of this reaction is minus 394. The other equation is given like this: 2 moles carbon and this is oxygen, and it produces 2 mole carbon monoxide. So the enthalpy change for this reaction is minus 220 kilojoule per mole. Okay. And what examiner is asking, it's asking for enthalpy change calculation. Calculate enthalpy change of reaction for which reaction? Better this reaction: carbon monoxide plus oxygen and carbon dioxide. Can you tell me how to solve this question? We have to use these two equations to develop this equation. Okay. And what rules, beta? What can we do? We can flip any of the equation we want. And in case of flipping an equation, the enthalpy change sign will be flipped. And we can multiply any equation with any suitable number. Okay. So ये टारगेट इक्वेशन से आप क्या क्या डिसाइड कर रहे हो कि किस इक्वेशन को फ्लिप होना चाहिए. Second equation should be flipped. Beta. Why you think this equation should be flipped? In the required equation, carbon monoxide is on left-hand side. In given equation, carbon monoxide is on right-hand side. So this compels us to flip this equation. So I will flip this first equation: 2 moles carbon monoxide goes to 2C plus O2. Therefore, equation is flipped. So the sign of enthalpy change will also be flipped. It becomes plus 220 now. और जो पहली इक्वेशन है उसे फ्लिप करना है कि नहीं करना, ये आपको कैसे पता चला कि पहली इक्वेशन को फ्लिप नहीं करना? कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड पे है और रिक्वायर्ड इक्वेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड पे है, तो पहली जो इक्वेशन है उसे अनफ्लिप्ड रखें. तो अब आप देखें, जब इक्वेशन फ्लिप नहीं हुई तो इसके एंथैल्पी चेंज भी चेंज नहीं होगा. अब ये थोड़ा देखें कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड उससे कितने मोल्स हैं. How many moles of carbon dioxide in the required equation? 2 moles. और given equation में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं? 1. So what should you do, beta? Multiply this equation with 2, beta. क्योंकि required equation में you have 2 moles of carbon dioxide. So when you multiply equation with 2, you have to multiply 2 with the energy change as well. अब बताओ cancellation किस किस की होगी? 2 moles of carbon and 2 moles of carbon, they are on opposite side, will be cancelled out. Your 1 mole oxygen will be cancelled with this 2, so that you are left with 1 mole oxygen on left hand side. Does it make sense? What you are left with left hand side? 2 moles of carbon monoxide. Okay? What you are left with right hand side? 2 moles of carbon dioxide. So enthalpy change will be sum of all these values. Okay? In सबको sum कर लो, so this will be enthalpy change. This is enthalpy change. So this enthalpy change is minus 568. 568. Whatever it is, that is the answer. So this is how you deal given equations to take out required equation, and then the energy change will be taken out accordingly. Right? अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन भेजे थे अकॉर्डिंगली ला. ओके, अब देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फर can be oxidized in 2 different ways. So how many equations they have given? 2 equations given hai with relevant energy changes. Beta, look, energy changes be given hai. And which equation is target equation? Can you see, beta? Target equation is this one. So what is your target now? To develop this equation from given equations.
तो अब गिवन इक्वेशंस में किसी इक्वेशन को फ्लिप करना चाहिए या नहीं? फर्स्ट इक्वेशन को फ्लिप करना चाहिए। क्यों बेटा फर्स्ट इक्वेशन को क्यों फ्लिप करना चाहिए? तो SO2 को रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए। देखो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन में SO2 रिएक्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आई विल फ्लिप लाइक दिस बेटा। So when I flip the equation, what happens to sign of this energy change? This becomes plus 296.5. Does it make sense? क्या इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है? Should we multiply this equation with any suitable number or not? Which number? How you came to know that you have to multiply? Because in required equation you have 2 moles of SO2. So what you need to do कि इस equation को आप 2 से multiply करो. When you multiply 2 with equation, you have to multiply 2 with energy change as well. अच्छा फिर बेटा सेकंड इक्वेशन को फ्लिप करना है कि नहीं? सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिखें 2 मोल सल्फर प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स यू 2 moles of SO3. Enthalpy change is minus 791.4. Now add these two equations. So but बताओ cancellation किसकी होनी है? 2s is cancelled with 2s. What about oxygen? You have 2 moles oxygen here and 3 moles there. So what happens, beta? These 2 moles will be cancelled with this 3, so that you are left with 1 mole oxygen on left hand side. वरना वो मैथमेटिक्स में आप कैसे करते हैं बेटा? You bring this 2 on this side, this becomes minus 2. This is plus 3. When you bring this 2 on this side, it becomes minus 2. So plus 3 and minus 2, so you are left with O2. And what you are left with, beta? 2 moles of SO2. And on the product side, you have 2 moles of SO3. This is the equation you wanted now. So अब इसकी enthalpy change will be sum of the energy change. That is 296.5 times 2 minus 791.4. Just solve it to get option. D is the option. So you got it, that how to attempt question of target equation. ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, should I proceed? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले I'll give you 1 minute to work on this. पहले आप just think, come up with the ideas. Just take 1 minute to think and suggest what should I do, beta? Should I flip any of the equation? Which equation should I flip? How you came to know कि second equation को flip करना? Required equation में C2H2 is on the right hand side, beta. So I need to flip this equation. Does it make sense, beta? So when I flip this equation, second wala, what I get C2H4, C2H2 plus H2. तो जब इसको flip किया, इसका enthalpy change will also be flipped, beta. Sign is changed. और first equation को flip करना है कि नहीं करना? ये कैसे पता चला कि first equation को flip नहीं करना? We need carbon and hydrogen on left hand side. और पहली इक्वेशन में कार्बन और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे हैं, तो this is 2C plus 2H2 arrow and it goes to C2H4 and enthalpy change is plus 52.2. Now बेटा cancellation किस किस की होनी है? C2H4 is cancelled out. हाँ, one hydrogen will be cancelled out with this 2. Does it make sense? So you are left with 2C plus H2, or right hand side where you have C2H2. So enthalpy change will be sum of these two values, which is 175 point. इसमें multiply नहीं करना पड़ा. What option you got? B or D? D. Okay. So, beta, just this, this whole debate was for this question. Okay. This is target equation, beta. ये target equation है. I'm giving you 2 minutes to
पहले आप खुद सॉल्व करो, देन आई विल कम विद इट। ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन वन है, ये टारगेट इक्वेशन है, राइट? और ये थ्री गिवन इक्वेशन है, एनर्जी चेंज भी गिवन है। इन तीन इक्वेशन से ये टारगेट इक्वेशन डेवलप करनी है, सो इजी। ये जो सेकंड इक्वेशन है, कैन आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद टू? इस सेकंड इक्वेशन को कैन आई मल्टीप्लाई विद टू बेटा? So when I multiply this second equation with 2, I have to multiply this energy change with 2 as well. Does it make sense? Now add all the three equations. What beta? All three equations में the components which are same and are on opposite side will be cancelled out. Now tell me कौन सी चीजें will be cancelled out? ये 4NO2 है ना, और 4NO है, और ये भी 4NO है, कैंसिल होगा कि नहीं? 4NO cancelled out. What other thing is cancelled out? 4NO2 and 4NO2 cancelled out. ऑक्सीजन सेम साइड पे हैं, सेम साइड वाले कैंसिल नहीं होते बल्कि ऐड होते हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन यू हैव? हाउ मेनी ऑक्सीजन यू हैव? 8 ऑक्सीजन। डज इट मेक सेंस बेटा? एंड हाउ मेनी अमोनिया यू हैव ऑन लेफ्ट हैंड साइड? 4NH3 and 8 ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सो व्हाट वाज डिफिकल्ट इन दिस बेटा? वाटर, ओ वाटर भी कैंसिल हो रहे हैं। लिसन बेटा केयरफुली। हाउ मेनी वाटर वी हैव ऑन द लेफ्ट? हाउ मेनी वाटर वी हैव ऑन द राइट? So 2 water will be cancelled with 6, so that you are left with 4 water on right hand side. Does it make sense? 4 ज्यादा water right side पे थे ना, तो right side पे you are left with 4 water. Does it make sense? और 4HNO3। नाउ अब इस इक्वेशन को टारगेट इक्वेशन से मैच करो, तो किस चीज का फर्क है? यू नो दिस इक्वेशन एंड टारगेट इक्वेशन में, इस इक्वेशन को इफ आई डिवाइड विथ 4, if I divide with 4, what I get beta? I get NH3, 2O2 plus 1 mole HNO3 plus H2O. So when I dividing the equation by 4, it means कि ये जो energy changes हैं, इसको भी 4 से divide करना है। Does it make sense कि नहीं? So how you would go is minus 904 plus minus 114 times 2, और प्लस माइनस 348 डिवाइडेड बाय 4। गॉट इट? क्योंकि इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया है, तो एनर्जी चेंजेस को भी 4 से डिवाइड करें। तो आप देखें इससे क्या आंसर बन रहा है। दैट इज योर ऑप्शन। वट एवर ऑप्शन यू गेटिंग, बी बेटा आ रहा है, तो बी इज द ऑप्शन बेटा। बी इज द ऑप्शन। गॉट इट? ठीक है। तो फिर बेटा जब इतने क्वेश्चंस किए हैं, तो एक बस ये आखिरी एक क्वेश्चन है, या ये फिर होमवर्क में खुद कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन पे खुद कर लेना। ये टारगेट इक्वेशन है, वो गिवन इक्वेशंस हैं, यू हैव टू डील टू डेवलप दिस टारगेट इक्वेशन एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली।